Hello everyone, I'm Sudipta welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, how are you all? Audio video सब clear अच्छी बस मत एरा confirm करे दियो then we will start the class as always. I'm not fine. I'm also not fine. Still I'm taking your class now. Then you have to be fine. Be present in my class. Okay. Okay. जिबा class start करिबा. Again I'm saying class को जेते बेल entry करूछो guys like ते जो माने share करिनो जाओ लाइक सेशन को शेयर करो जो मैंने सब्सक्राइब करिनो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ओके स्टार्ट करिबा वेरी गुड इवनिंग बाघ बाबू सो लेट्स सी आज रो सेशन गाइस आपण मानकर अछि दिस इज जुडिशियरी ऑफ ओडिशा सो ओडिशा रो जुडिशियरी सिस्टम ऊपर जहां भी क्वेश्चंस आसीबो दिस इज ऑल अबाउट इट ओके चलो सी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू like in different batches in 3499 you can purchase the whole 1.5 year batch in this Mahapack full the OSSC CGL PEO RI every batch are under this Mahapack and if you have any query or facing any query you can contact to this number and you can solve your problem. Next guys for teaching also same features but the validity is 1 year and the amount is 1499 only. See what's the first question of today's class? Hello Sonal. Chalo. So the High Court of Odisha was established in which year? Tell me, Odisha High Court apanakara established kebe heitla? Ko year ethi pachara jaichi. So aji apanakara application ne bhi class thila judiciary upare so apan manakara ethi gote type ra revise hejibo. Yes or no? Gayatri, Corrida Pixel, whatever sabu. Yes. So it is always 26th of July. कितने ना मैम 26th of July 1948. 1948 मन रखिबा. See, so Odisha become an independent province केबे हैला जदि आपन क्वेश्चन आसीबो कि when did Odisha become a separate province on language basis? So Odisha गोटे मात्र स्टेट जे कि before independence language basis रे separate province separate state form हेतिला. जदि after independence आपन को पचरा गला then your answer will be Andhra Pradesh. That is after independence 1947 after, this is 1947 before. Clear? See, the separate High Court was established at that time. That means the government of India later issued the Odisha High Court Order 1948. And in 1948, jodi apanu pacharibo which Indian Government Act under it, then it is under the Indian Government Act 1935. Okay. See, according the Odisha High Court was formally inaugurated on July 26, 1948. Hence, the High Court of Odisha was established in the year 1940. Clear etiki? 1935 वाला Indian Government of Indian Act को मने रखियो. Next question for you. Where is the principal? Okay. Where is the principal seat of the Odisha High Court located? एटी कौन पचारची? Now where is the principal seat of the Odisha High Court? Odisha High Court ऊपर whatever the question is, your answer is related with the Cuttack. One and only Cuttack. Okay. Clear? See. So the seat of High Court is in Cuttack. The Odisha High Court established 1948 as I have already told you and its principal seat is at Cuttack which is one of the oldest cities in the state of and served as the historical first apanagara Cuttack thila. Then 1948 रे ही हमारा capital भी shift हेची from Cuttack to Bhubaneswar. That is the year on which year the High Court is established in the Cuttack. Before that apanagara Patna High Court रो गोटे bench apanagara solve करूथिला गोटे bench आपन को कोना ना मैम hearing सुनाउथिला. Clear?
नेक्स्ट चलो टेल मी हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट टेल मी हु वाज किए थिले आपनकर ओके who was the longest serving chief justice of the Odisha High Court that is Justice B Jagabandhu Das, Justice H.L. Agarwal, Justice S Burman or Justice R.L. Narsimha सबु बेले no not at all C हेबे नाही जणे जदि आपनकर भूल आंसर मारुची that doesn't mean अमित कोन तुमका कहिबी I don't have any second word आज ये पेड क्लास रे पढ़ेली पेड क्लास रे पढ़ेला परे भी तमरो भूल होची पेड क्लास रे सोई पड़ी थिलो ना अलगा दुनिया रे थिलो the right answer will be Justice R.L. Narsimha जदि निद लागुची then just go and sleep you need a proper sleep okay चलो so longest serving chief justice of Odisha जदि पचरा गला तो high court रो then this is Justice R.L. Narsimha word टा दिमाग रे जहन रे घुसेई दियो नेक्स्ट देखो द नेम जदि आपन को पढ़े गला कोन ना मैम जदि फास्ट आपन को पचरा गला जदि आपन को लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वेश्चन ने पचारी छी ताहाले आपन माने कोन कहिबे ना जस्टिस आरएल नरसिम्हा जदि आपन माने को कोन पचारी छी ना मैम फास्ट पचरा गला कि चीफ हमर हाई कोर्ट जतबेले एस्टैब्लिश हेई छी 1948 रे द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट कि आपनकर सर्व करिसंदी ना मैम जस्टिस वीर किशोर रॉय एम आई क्लियर So the first Chief Justice of Odisha High Court is Virakishore Rai and High Court established heiji 26th of July 1948 Cuttack and जदि आपन को फर्स्ट वुमेन जज पचारी देला फर्स्ट वुमेन जज ऑफ ओडिशा मने रखो अगेन ए क्वेश्चन आसीबो जदि सेठी भूल आंसर देइछो द क्लास विल बी एंड that is Amiya Kumari Padi the longest serving chief justice kiye justice R Lakshman Narsimha 1956 to 64 longest serving करichanti clear next चलो Tell me, under which article of the Indian Constitution is the Odisha High Court established? Indian Constitution na ko article under re apanकर Odisha ra High Court. Odisha not only the Odisha High Court, amaro jeti ki state achi like Supreme Court under re apanकर के रहउची High Court रहउची. So Supreme Court under re different type ro state High Courts माने रहिबे. एटा को article under mention हेची tell me. Article 214, 216, 231 or 215. What will be the right answer? Now this is Article 214. Clear? According to the Indian Constitution, Article 215 states that there shall be a High Court for each state. Nothing special for the Odisha. That is for the each state. And the Odisha High Court, formerly Odisha High Court, was established under Article 214 of the Constitution of India as the highest court of the appeal at the state level. Clear है Next चलो. The Odisha High Court exercise which type of jurisdiction? को type रो jurisdiction always आपनकर Odisha High Court रे same type रो jurisdiction सबु बेले से देखिया को मिले and सबु type रो से type रो ही jurisdiction से कोन face करे आपनकर कोन hearing सुनाए या फिर हमें कहि परिबा fair decision दिए same type रो jurisdiction कोन हबो right answer yes that is original that is appellate that is supervisory so all of the above comment option देखि त माने right answer मारुछ I know that but आपण मानक पाखरे जस्टिफाइड नथिबो रीजन मु जानि छी सो द ओडिशा हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस मल्टीपल टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन कोन होची ना मैम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दैट मींस द हाई कोर्ट हियर्स सर्टेन केसेस डायरेक्टली विदाउट हेल्पिंग ऑफ द अदर लाइक आपण ता ऊपर जति के सुप्रीम कोर्ट अछि सो सुप्रीम कोर्ट तळे भी किछि डिस्ट्रिक्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कोन हो बट सुप्रीम कोर्ट तळे आपनकर कोन डिफरेंट जोनल कोर्ट सब थाए जोटा कि हमर स्टेट कोर्ट्स माने हाई कोर्ट्स माने को ऊपर ही थाए बट तांकर विदाउट हेल्प रे विदाउट एनी लाइक कोड तांकर राय न मागी कि से माने तांकर निजर राय देई परिबे कि ना हाई कोर्ट सो दैट कैन बी डू अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन and guys kon हुए now such as those related to the violation of fundamental rights election of MLAs and MPs marriage divorce wills and the company's law then as a appellate jurisdiction kon कहूची ना it hears the appeals from the decisions of subordinate courts that means आपनकर civil and criminal courts मिसे कि आपनकर subordinate courts कहिला civil कहले criminal आपनकर कोउथरे आसीबो ना मैम subordinate रे आसीबो वेरे civil की ना district judge दीटा जाक को ही फॉर्म करंती लाइक जते बेले सिविल कोर्ट रे आसंती से डिस्ट्रिक्ट जज भाबरे आसंती जते बेले आपनकर कोन ना मैम सबऑर्डिनेट कोर्ट रे आसंती सेते बेले आपनकर कोन सबऑर्डिनेट जज भाबरे से काम करंती नेक्स्ट देखो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन कोन कहूची दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर द हाई कोर्ट हैज सुपरवाइजरी कंट्रोल
over all subordinate courts. So jette apanakara choto moto courts achanti, district court hela, subordinate courts hela, and ta tolku ame dekhiba ahuri varieties of courts mane amara kono different segregation heichi courts manakara se sabu upare state ro highest level ame kon कहूचे ना ma'am, that is Supreme Court, sorry state रही High Court, then nation wise देखिले आपण देखिए Supreme Court. Clear? हाँ जहा हो. Okay, next देखो, how many judges including the Chief Justice are sanctioned in the Odisha High Court as of 2025? कहिला मते 2025 सुधा how many judges are including the Chief Justice? केते जना judges हमर अछंती 20, 26, 30 or 33 or 47? Yes, that is the 33 is the right answer. So Steve, कौन कहूची ना मैम, the Odisha High Court has a sanctioned strength of 33 judges, which was increased from 27 to 33. केते 27 to 33 हमर एटा चेंज हे की हेच. Clear? So as of 2025 amara 33 amara judges achanti including the CCO. Clear? Next, the subordinate judiciary of Odisha is headed by, the subordinate judiciary of Odisha is headed by Chief Justice, District Judge, Chief Minister or Law Secretary. कौन हमारा right answer? The subordinate judiciary of Odisha is headed by, किए तांको head किए करूची मते को district judge. Subordinate judiciary कथा एठी आपन को पचाची, then your answer will be the district judge. Clear? So the Odisha High Court supervises all the subordinate courts ता under रे आपनकर High Court under रे जते subordinate courts रहिला ताकू subordinate judge माने को से कोन High Court जते कि judge ताकू माने subordinate judge माने तांको assist करिवे. The district judge is the head of subordinate judiciary in each district. When dealing with civil cases, it is called the district judge. When dealing with the criminal cases, it is called as the session judge. मन रहिला जो district रे जणे ही judge रहिबे किंतु से दीटा रोल प्ले करिवे. जेते बेले क्रिमिनल केस को हियरिंग देबे तांको हमें कोन कहूचे ना मैम सेशन जज. जेते बेले सिविल केस रा हियरिंग करिवे हमें तांको कहूचे डिस्ट्रिक्ट जज. Am I clear? Then capital punishment given by a session judge must be confirmed by the High Court. जदि किछि भी capital माने गोटे सपोज आजीवन कारादंड हैला, फांसी भलिया दंड हैला, एई भलिया जदि गोटे सीरियस like decision nebar अछि, serious गोटे कोन हियरिंग देबार अछि, then in that case आपनकर High Court interfere करिवो unless करिवो. Clear? Next, next who appoints the Chief Justice of the Odisha High Court? Odisha High Court Chief Justice को आपनकर की appoint करंदी मते को. President of India. Very good. So who appoints the Chief Justice of Odisha High Court? Na ma'am, President of India. Because mu jani chi ete government of Odisha dei deithibo and most of the students apan manakara government of Odisha bhabi ki confuse hebe. But let me clear you, government like amara kon governor of Odisha. Governor of Odisha is not the higher authority above the CCO. Clear? President hi appoint karibe, but president jo appoint karibe, in that case governor and आपनकर कि ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए माने तांको राय देई परिबे, ए मानकर मतामत, ए मानकर सजेशन रे आपनकर हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा या फिर जे कोनसी स्टेट रो हाई कोर्ट रो न्यू जज माने सुप्रीम कोर्ट रो माने सॉरी चीफ जज हमर हायरिंग हेबे अंक मानकर सजेशन रे, बट ही इज नॉट द हायर अथॉरिटी. द हायर अथॉरिटी, द हायर लाइक कोन डिसीजन मेकिंग कहार रहिबो ना मैम प्रेसिडेंट कर ही रहिबो. नेक्स्ट देखो, the President of India, the Chief Justice of High Court, including the Odisha High Court, is appointed by the President of India under the Article 217 of the Indian Constitution. Article pacharibo. So the appointment is made after the consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the concerned state. In this case, the Governor of Odisha, the President's decision is final. Once these consultations are completed, these ensure the independence of the judiciary. That means आपनकर कोन ना decision हबो, supreme decision will be
is taken by the president. But आपनको suggestion के दे परिबे ना मैम president suggestion दे sorry president करो last decision रहिबो but suggestion तांको के देबे chief justice of India देबे and आपनकर respective state रा governor तांको suggestion दे परिबे. Next चलो. Which of the following is the lowest court in the civil judiciary of Odisha? Guys, civil judiciary रे जोटा कि आपनकर colonial period सहित relate करिके कहि परिबो. मते कुआ which of the following is the lowest court in Odisha in the civil judiciary of Odisha? ना not at all satisfy सेमिति किछि नाही. जने ओसीएस सिविल सर्वेंट को नो ओसीएस कथा कहिला जेते बेले स्टेट रो किछि भी रिलेटेड तमे कहूचो तार हायरिंग अथॉरिटी एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सब बेले गवर्नर का पाखरे थाए गवर्नर का पाखरे थाए हैला. इन दैट केस हमर सीजेओ चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा रेस्पेक्टिव स्टेट इंटरफेयर करिवे इन दैट केस और गवर्नर इंटरफेयर करिवे. ओके नेक्स्ट आईएएस लेवल ले हेले भी प्रेसिडेंट करिवे डिफरेंट जानी नहीं ठीक से बट प्रेसिडेंट आपनकर इंटरफेयर करिवे. Which of the following is the lowest court in the civil judiciary of that is the Munsif court? Okay, कौन होइबा Munsif court. See, the Munsif court also known as the court of civil judge that is the junior division बोली हमें कहूचे is the lowest level of the civil judiciary in Odisha and in India. Clear? And it deals with civil cases of smaller monetary value or lesser importance such as property disputes, rent matters and the small claims. Above it lies the subordinate judge, civil judge, senior division, everything. So basically तमने रखो मुंसिफ कोर्ट आपनकर कोन नै सबुटु जूनियर लेवल ऑफ कोर्ट. Clear? Next चलो. Odisha was earlier under the jurisdiction of which High Court before 1948. कहि देली 1948 रे आपनकर Odisha High Court form हैला but before that आपनकर 1900 केते 19 बोधे 1919 रे गाइस गोटे पाटना हाई कोर्ट रो गोटे बेंच आपनकर बसितिला. लेट्स चेक द एग्जैक्ट ईयर. सॉरी 16 not 19 16 that is 1916 हैला. So Patna High Court before the establishment of the Odisha High Court in 1948, all judicial matters of Odisha were under the jurisdiction of the Patna High Court. When Odisha became a separate province in 1936, guys, it still didn't have its own High Court. So the Patna High Court established in 1916 continued to serve Odisha until 26th of July 1948 तक हमारा सर्व करिछि Patna High Court Odisha रो सब जुडिशियरी डिसीजन मेकिंग रे. जो मानकर घुरुची don't complain because there is nothing in my hand, so better you just quit or resign. That's it. Okay, next. Tell me which article of the Constitution deals with the High Court's power to issue the rights. कौन हवा मते को reads ऊपर guys. What will be the right answer? Yes, the article 226, 227, 32 or 230. Article 226. So article 226, 226 of the Indian Constitution empowers the High Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights and for any other purpose. Unlike the article 32, which is limited to fundamental rights. एतिकी मन रखिबो. Next मते कुआ. The Odisha Judiciary Academy is situated at, guys, Odisha Judiciary Academy is situated at what? जदि तमे तमर प्रिपरेशन सेति की स्ट्रांग करिथिबो, then there is no place for being nervous. So the Odisha Judicial Academy is situated at, guys, Odisha Judicial Academy आपनकर कोठी अछि ना मैम, obviously कटक रे ही रहिबो. So the Odisha Judicial Academy is situated in Cuttack near the premises of the Odisha High Court. It functions under the supervision of the High Court of Odisha and state's premier institutions. Clear? Next chala. What the first women judge of Odisha High Court was? Guys, Odisha ra first.
The first woman judge of Odisha High Court was first woman judge Odisha High Court ro kiye thile? The first woman judge of Odisha High Court, yes, that is Amiya Kumari Padhi. Amiya Kumari Padhi. The first woman judge of the Odisha High Court was Justice Amiya Kumari Padhi. She was appointed to the bench of April 18, 1988 and served until her retirement September 14, 1995. Appointment Justice Padhi was elevated to the position of judge of the Odisha High Court on April 1988. Etik clear? Next. Which is the highest criminal court in district of Odisha? चलो अच्छा मु स्माइल करे तो मानकर पाठ सब मन रही जीवो देन कहून आसीबी हसीबी 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 तापर क्लास सारी जीवी पाठरे फोकस कर जदि रिजल्ट खराब करियो तम मानकर स्माइल भी हजि जीवो बुझिलो आसा so which is the highest criminal court in a district of Odisha guys criminal court कथा पचारिला एठी आपन को criminal court कथा पचारि छी आपन को district level ले भी पचारछि so what will be the right answer chief judicial magistrate sessions court assistant session court or high court what will be the right answer this is session court कोन कहितली जिते बेले सिविल केस रा हियरिंग करूचे आमे कहूचे द पोजीशन इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेते बेले आपनकर सेशन कोर्ट करूची माने क्रिमिनल केसेस ऊपर हायरिंग लाइक हियरिंग करूची देन आमे कहूचे सेशन कोर्ट एतिके बुझा जणिए ही कोर्ट रे जज रहिबे जणिए ही जज रहिबे बट दीटा डिफरेंट रोल प्ले करिवे जेते बेले सिविल केसेस को हियरिंग करिवे ही विल बी और सी विल बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज जेते बेले से क्रिमिनल केसेस को हियरिंग करिवे ही विल बी द सेशनल जज क्लियर चलो तो एतिके क्लियर द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स केमिति रहिबो ना मैम सेशन कोर्ट फर्स्ट रहिबो दैट इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हाईएस्ट देन असिस्टेंट सेशन कोर्ट तापर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास क्लियर नेक्स्ट District judges in Odisha are appointed by district judge Odisha रे appointment पांती कहा द्वारा High Court रे आपण माने जानिले High Court the Chief Justice of High Court is appointed by the President of India but in the case of district judge आपण माने कर की appoint करती Governor in consultation with the High Court Chief Minister President or Chief Justice alone. Chief Justice तो कभी alone है बेनी ये obviously Governor in the consultation with the High Court. है ना नहीं? Next देखो. So Governor in consultation with the High Court. According to Article 233 of the Indian Constitution, the appointment of the district judges in any state are made by the Governor of that state in consultation with the High Court judge. ये भी थी बे judge नहीं High Court or a jurisdiction, total jurisdiction body, jury members. से माने रखो कोना ना मैम suggest करिवे to hiring that particular district judge. Clear? Next. Odisha State Legal Services Authority was constituted under. Odisha State Legal Services Authority was constituted under which article? Oh sorry, which act पचारिछि? कौन पचारिछि? State Legal Service पचारिछि ना कि? Okay. So Legal Services Authorities Act 1987, Legal Aid Act 1992, Odisha Legal Service Rules 1990 or none of these. Comment option मारू ना none of these. All of these थिले मार दे थांदा ना. Okay. So what is the right answer? The Legal Service Authorities Act 1987 according. So the Odisha State Legal Services Authority is constituted under the section 6 of the Legal Service Authorities Act 1987 and this act was enacted by the Parliament of India to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society. So जो लोक अदालत है कोना फ्री एंड फेयर डिसीजन नेबा लागि मैम एटा टिके आउथरे बुझे देबे कोटा मते कुआ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 रे 87 रे आपनकर एनाक्ट हेतिला जोथरे आपनकर लोक अदालत फॉर्म हेतिला जोथरे के आपन मान जानिबे हमर धनी गरीब केही मैटर करंतिनी मैटर करे द फ्री एंड फेयर कोन मैम हियरिंग जोटा कि फ्री एंड फेयर आपनकर केस रे हियरिंग हबो नो मैटर जो आपनकर कोंतिनी कि आईन आखिरे अंधर पत्ता माने हमरा कोन अंध पुटुली बंधा हिची दैट मींस कोन
आईन अंध नुह आईन फेयर डिसीजन नब बोली देखिबनी किए धनी किए गरीब ता अकॉर्डिंग गाइस डिसीजन नब बोली क्लियर चलो नेक्स्ट मते को लोक अदालत इन ओडिशा फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अपन क्लास रे सर प्रणाम नेक्स्ट को लोक अदालत इन ओडिशा फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ कहार सुपरविजन ने गाइस लोक अदालत अपन मन कोन कहली ना मैम लोक मानकर अदालत कोन ना मैम लोक मानकर अदालत को हमें कहूचे लोक अदालत तो लोक अदालत करो अरे वाह सर मोर भाग्य अपन कहिलेटा चलो सो लोक अदालत गाइस हमें कोन कहूचे ना लोक मानकर अदालत सो ऑब्वियसली एटा कहा पई कहा को सुपरविजन करिया को स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट एंड एसएलएसए और द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहा को ऑप्शन बी लेट्स चेक ऑप्शन बी केमिति हबो तो ऑप्शन सी द हाई कोर्ट एंड द एसएलएसए what it is loco adalat the people's courts are organized in odisha under the legal services authorities act 1987 जेमिति कि कहली लोक अदालत जदि आपनकर को एक्ट अंडर रे फॉर्म हेची द इंडियन 1987 मन क्लियर ओके so they function under the supervision of the odisha high court and are coordinated by the odisha state legal services authority that is the SLSA. The main objective of the local adalat is to provide the speedy, inexpensive and the amicable settlement of disputes through the conciliation rather than litigation. That means कोन ना कोर्ट रो बाहर ट्राई करा जाय कोन ना आपोस बुझामणा रे केस टा को सॉल्व करि देबा पाई कहली ना सुदीप्ता बेहेरा अरे वाह सुदीप्ता अच्छा हो सुदीप्ता बेहेरा कहली ना आपनकर लोक अदालत बाहर ट्राई करा जाय कोन ना मैम केस टा को केते इजी वे रे सॉल्व करी हबो गोटे कोन डॉक्यूमेंट गोटे कोन कहिबा गोटे फाइल गोटे कोर्ट रे फाइल न करी के केस टा को आउट ऑफ कोर्ट हमें जदी सेटलमेंट करी पारु छे कोन हिसी माने तमने बोथे अछि पढ़ा मूड रे ना हो ना कोन तमन को टीचर आसुची कोन पढौची तमे सेइटा देखुनो टीचर हसिला ना नाइ टीचर कोन कहूची सेटा को कोटा डाउट बाहुची सेइटा पचारो कोटा डाउट बाहुची सेइटा पचारो फालतू रे काई गॉसिप करूछो चलो नेक्स्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन ओडिशा प्राइमरीली डील विथ गाइस फास्ट ट्रैक कोर्ट आपनकर आसिला फास्ट ट्रैक कोर्ट आसिले आपण कुहंतु कि ओडिशा रे प्राइमरीली कहा को डील करूची फास्ट ट्रैक कोर्ट दैट इज द सिविल केसेस मैट्रिमोनल केसेस क्रिमिनल एंड सेक्सुअल ऑफेंस केसेस लैंड डिस्प्यूट सो फास्ट ट्रैक माने जे कोनोसी केस ता गोटे फाइल हैला ताकू गोटे फास्ट एंड फ्यूरियस वे रे आपनकर सॉल्व हेबा निहाती दरकार सो सेइथि पे आपनकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बसिछि सो ए फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा को करूछि ना मैम क्रिमिनल एंड सेक्सुअल ऑफेंस केसेस को कोन मैम बेसी प्राधान्य दोछि ओके so fast track courts guys were established in Odisha to ensure the speedy disposal of the criminal cases particularly those involving the serious offenses okay and over time the focus shifted mainly to cases related to criminal against women and children including the rape sexual assault and the POSCO act case clear next चलो key facts mention करिछि टिके चेक करिवो next family courts in Odisha were established under which act family court आपण मानकर ओडिसा रे एस्टैब्लिश हेछि को एक्ट अंडर रे मते कुहा family courts in Odisha were established under which act को एक्ट अंडर रे गाइस एटा एस्टैब्लिश हेछि मते कुहा एबे कहिथिली द फैमिली कोर्ट गाइस 1984 2005 1987 और 1955 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 हेछि दिस वन इज द डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट ना मैम दिस इज यौतुक
हमर जौतुक निर्यातना हे गला लीगल सर्विस नाही मैरिज एक्ट नाही सो रहिला कोटा obviously family court act 1984 so family courts in Odisha were established under the family courts act 1984 passed by the parliament in India. The act aims to promote the conciliation and ensure the speedy settlement of family disputes such as marriage, divorce, child custody and the maintenance. Clear? Chalo. Next mata ko which is the highest judicial authority in Odisha? आज कोर्ट एंड एक्ट एमसीक्यूज बेसी अछि मैम कमलेश ऑलरेडी क्लास रो थंबनेल टिके बाबा चेक करि दबो स्टार्टिंग रे जुडिशियरी ऑफ ओडिशा मेंशन ही थी ओके which is the highest judicial authority in Odisha guys Odisha रे highest judicial के रहबे सुप्रीम कोर्ट त आसीबनी obviously Odisha रे के रहबे ना Odisha हाई कोर्ट रहबो होना नै मते को so Odisha हाई कोर्ट आपनकर कोन ने मैम पचारि छि क्वेश्चन अबाउट द जुडिशियल अथॉरिटी ताहाले हमें Odisha हाई कोर्ट जदि एठी एडमिनिस्ट्रेटिव पचारि थांदा कोन पचारि थांदा ना मैम एठी एडमिनिस्ट्रेटिव पचारि थिले ताहाले हमें कोन कहिता ना दिस इज मैम गवर्नर am I clear next देखो so the Odisha High Court officially Odisha High Court guys highest judicial authority in the state of Odisha हितिला to 26th of July 1948 रे फॉर्म हितिला clear चलो next मते कुआ the governor of Odisha the governor of Odisha administers the oath of office to मैम आज क्वेश्चन नंबरिंग है ही नहीं question 28 to 30 28 टा question अछि don't worry 28 टा question अछि चलो so the governor of Odisha administers the oath of the office to what have right answer को मते what will be the right answer the governor of Odisha administers the oath of office to what chief justice of India chief justice of Odisha high court advocate general or district देखो गवर्नर कथा पचारले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एलिमिनेट हे जिवे तो रहिला की ऑब्वियसली आपनकर की ने मैम चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एम आई क्लियर चीफ जस्टिस एंड द अदर हाई कोर्ट जजेस द आर्टिकल 219 अंडर एट आसुची अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आर्टिकल 219 the governor of the state administers the oath of the office and the secrecy to the chief justice and the other judges of the high court clear चलो नेक्स्ट मते को तो ओडिशा जुडिशियल सर्विस okay कुआ the Odisha judicial service examination is conducted by the Odisha judicial शांतनु ओडिशा बजेट रो ऑलरेडी क्लास सॉरी लानी कोठी तमे थिलो प्लीज टिके जाई कि देखि दियो प्ले स्टोर जाई कि चेक कर दियो हेलो मते को द ओडिशा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय कंडक्ट किए करू छी ना मैम ओपीएससी कंडक्ट करू छी सी द ओडिशा जुडिशियल सर्विस गाइस ओजेएस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर चलो सो कंडक्टिंग बॉडी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्ट कोन होची मैम सिविल जज रे जूनियर डिवीजन रे पोस्ट हेबे देन तांकर प्रमोशन हे से माने जिबे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 234 अंडर माने अंडर दिस आर्टिकल गाइस अपॉइंटमेंट पाइबे एंड सुपरवाइजिंग अथॉरिटी के हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स डील्स विथ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस गाइस बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को किए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स डील्स विथ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस What will be the right answer? Subordinate judge, chief judicial magistrate, district and session court, nayak panchayat. कौन हबो ना district and sessions court. So dual role means कौन कहूची ना the judge presiding over the court. जेमिति कहली district court civil hearing कला बेले तांकर position को district court भाबरे. जते बेले criminal case रा hearing करिवे तांकर position को ना session court रा head. कोन session court और session judge भाबरे से काम करिवे. So highest authority भाबरे काम करिवे it is the highest judicial authority within a district and has both original and appellate jurisdiction. The court's civil jurisdiction is governed by the code of the civil procedure. एतिके मन रख. Next, the Advocate General of Odisha is appointed under which article?
Tell me, the Advocate General of Odisha is appointed under which article? एठी कौन Advocate General पचारि देले Article 165, 162, 168 और 170 को article under आसीबो? हाँ सुदीप्ता both district court and session court आपनकर district court रे ही रुहे. So Article 165, Advocate General of State. The Advocate General is the highest law officer in the state, responsible for giving legal advice to the state government. So the position is created under Article 165 of the Indian Constitution. Clear? So appointment, the governor of each state appoints a person who is qualified to appointed as a judge of the High Court to be the Advocate General of Advocate General of the state. Is it clear? Then Article 162 deals with the extent of the executive power of the state. Article 168 deals with the constitution of the legislature in the state. Article 170 deals with the composition of the legislative assembly of the state. Clear? Next चलो मते कुआ, who is the current chief justice of the Odisha High Court? Odisha High Court as of 2025 अरे भूल ही जाइछि ना, भूल ही जाइछि, मेंशन नहीं छाड़ गोटे ग्रेस मार्क पाई गलो तमे, ग्रेस मार्क गोटे पाई गलो. ऑप्शन एठी कोन रहबे? टंडन ऑप्शन नहीं. So this is a grace mark for you. So see, Justice Harish Tandon, guys. So the current Chief Justice of Odisha High Court as of October 2025, Justice Harish Tandon. Justice Chakradhari Saran Singh retired on January 1925. So Chakradhari Saran Singh को replace करिचंती Harish Tandon. एतिक मन रहिबा. And Justice Arnindam Sinha was appointed as the acting Chief Justice with effect of January 20, 2025. ए जो आपनकर कोन कहिछि ना मैम acting Chief Justice माने कोन ना मैं absence रे आपनकर जे रोल प्ले करियो तांको हमें acting Chief Justice कहछि. So Justice Harish Tandon was appointed as the Chief Justice of the Odisha High Court March 21, 2025. Next, मते को ग्राम न्यायालयस in Odisha were established for. ग्राम न्यायालयस in Odisha were established for कहा पाई? मते तो लागुच जेमिति मोरटा क्लास नुह, एटा होछु गोटे मैरिज मैट्रिमोनियल साइट. सब डिफरेंट आईडी रे आसुचो, एटा को क्लास बदल रे मु भाबुची चेंज करि देबी. त माने चाहो सब डेटिंग साइट एटा ओपन कर दोछि. सब डिफरेंट आईडी रे आसो, जे जाको पटै परला पाठ साठ होबनी, जाओ धर बुल. ते ही चलु जेठी माने मु बोर्ड को अने की पढुची, जेते बेले बाहर को अने दोची माने तम चैट को अने दोची, संगे संगे के कार नंबर मागुथुबो, के कार आईडी पचारुथुबो, काहे कि तमरा लेट हैला पचारुथुबो. मु जाउची सोई पडिबी माने मु जाउची सोईबी. अरे तमु निद लागु तमे सुओ माने कहिबाटा कोन निहाती दरकार. एठी जदी 200 पिला प्रेजेंट अछंती, जणे पिला जदी सोई पडला मु कोन जानि देबी? अरे नाही क्वीन ऑफ नेचर सोई पडिला, अरे नाही अंकिता सोई पडला, मु तो जानि परिबिनी. जहा को भल लागुनी तमे सोई पडा, रिकॉर्डिंग परे देखिबो. जदी किछि भी न देखिबो ताहल सेटा तमरो लॉस ना, मोर तो लॉस नुह. काई एमिति माने कोथि पाई एमिति उत्पात काहे कि होचो? एमिति उत्पात करी सो मार्क सिक्योर करि दबो. जेते बेले कमेंट सेक्शन को ना एटा तम आईडी नुह, एटा मो आईडी. काली तमे क्लास को आसी नथिलो, आज सकाळ क्लास रे कुआडे जाइथिलो, तमे खाई सारिलणी, रोसई आज कोन हेची, व्हाट इज दिस? चलो, so ग्राम न्यायालयस in Odisha were established for. established कोथि पाई हेची? ग्राम न्यायालय हेची माने कोन? रूरल एरिया पाई हेथिबो, अर्बन एरिया रे पाई हे नथिबो. लेट्स चेक. Now this is for the rural areas. Clear? देखो, so the Gram न्यायालयस Act 2008 was enacted to provide the speedy and easy access to the justice system in the rural areas of the India. So Gram न्यायालय माने माइंड रे पुरै दियो ग्राम एरिया. ग्राम means rural. Clear? No more explanation needed. Next. Tell me, the Odisha High Court was carved out from which High Court? Odisha High Court आपनकर carved out हेछि को High Court? हां परा करंट अफेयर्स हे मानक पयडा.
The Odisha High Court was carved out from which High Court? Ko High Court ru obviously apanakara Patna High Court ru hi carved out hoichi because apanakara till 1948 from 1916 apanakara Patna High Court hi serve korthila kiye na ma'am Patna High Court serve karuthila as the law and authoring body. Clear? बुझिगला? Next. The Odisha High Court emblem contains which of the following? Guys, Odisha High Court ro emblem कौन contain करुछि? Ashok Chakra, Konark Chakra, Scales of Justice or both B and C? Both B and C asre कौन? ना Konark and Scale of Justice. कौन करिवो मते कुआ? कौन करिवो एठी कुआ? सत्यवती तुमको निद लागुछि? निद लागुछि कि सत्यवती? Then please जो एटा क्वेश्चन मन रखि था केते की टाइम क्लास जाईची बाकी सोई पड़ा उठी की पुनी क्लास देखियो हैला नो प्रॉब्लम. So एठी कोन आछि ना both B and C. So the emblem of the Odisha High Court features a combination of the Konark wheel and the scale of the justice. Clear? So Konark wheel, the wheel from the Konark Sun Temple is a significant symbol of the Odisha cultural heritage. While the scale of justice are a universal symbol represents the court functions delivering fair and impartial judgments. That means कौन गोटे निकिति थिबो जोतरे फेयर डिसीजन आसुथबो बराबर का थिबो कोठु गोटे ऊपर नीचे नथिबो हना नहीं. चलो नेक्स्ट सरीगला तो कौन चिलौथला क्लास सरिया पई सरीगला. Guys again कहूची 1.5 year validity रहूची 3499 रहूची बैच रो प्राइस जोटा कि महाकाक रो प्राइस या अंडर रे आपनकर ओडिसा गवर्नमेंट रो जते भी एग्जामिनेशन आसीबो 1.5 वर्ष भीतर सेटा या अंडर रे कवर ऑफ हेसिबो. तो जो माने भी बैच परचेज करबा को चाहउचंती गाइस टू enact this batch. Next for teaching examination same and जो माने पीडीएफ पाइबा पई चिलौचो फ्री पीडीएफ पाई ए टेलीग्राम QR कोड को स्कैन करंतु एठी हमर क्लास एंड रे पीडीएफ शेयर करा जाउची. एंड गाइस जो माने मो सहित पर्सनली कनेक्ट हेकि रहबा को चाहउचो सुदीप्ता जीके नेटवर्क इज माय इंस्टा आईडी यू कैन फॉलो मी देयर. दैट्स इट. बाकी कुह कोन कहउतिलो क्लास मजरे काई इरिटेट करूतिलो. अच्छा प्रमोद निकिति समान न थाए ऊपर तळ थाए हां मे भी ताले मु ठीक से देखि नथियो समान नथिबो ऊपर तळ हेकि थिबो. कहली तो मु देखि नथिबी थिबो आ कोन मानिली ना. किसी प्रॉब्लम नहीं किसी डाउट नहीं. कैन वी एंड द क्लास? सुदीप्ता मैडम और सुदीप्त जानी पारुनी मे बी सुदीप्त हेतिबो. तो मु तो जानिनी केते मार्क कोन आसीबो बिकॉज़ डिफरेंट शिफ्ट रे आपनकर वेरी करूची ओडिसा जीके रो वेटेज. सीजीएल रे ओडिसा जीके रो वेटेज बहुत अछि बट हमर आरआई रे वेरी करूची एंड शिफ्ट वाइज पुनी नॉर्मलाइजेशन हबो. आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपनकर रैंक आसीबो तो सेटा भी डिपेंड करिवो. तो आपनक शिफ्ट रो बेस्ट करिया को ट्राई करू नो मैटर को सब्जेक्ट रो केति की को टॉपिक रो केति की आसीला. Am I clear? चलो क्लास वाइंड अप करूची. मैम पेड क्लास रे आज हेथिला हां सत्यप्रिया आज लाइक आपनकर कोन जुडिशियरी ऑफ ओडिसा पेड क्लास रे एंड हेथिला सेति लागि पिलांकर गोटे दरकार थिला लाइक जुडिशियरी ऑफ ओडिसा एंड तमानकर रिवीजन हेजिबो दैट्स व्हाई मु नै केस. हां विश्वजीत आखी प्रॉब्लम हेछि. चलो good night, take care of yourself, but before that to prioritize your parents would be your first priority, no one else in the world. Thank you so much. Chalo bye bye.